Hare Krishna. Let's begin the session with prayers. Namo Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। So welcome all to this edition of Bhagavad Gita as it is. Today we will continue to discuss the chapter 14, 14वें अध्याय हम कर रहे हैं भौतिक निसर्ग का त्रिगुणों के बारे में, the three modes of material nature. And so far Krishna has started introducing us to the three modes of nature. So in shloka number 6, 7 and 8, he introduced to us different factors of sattva guna, rajo guna and tamo guna. तो श्लोका 6, 7 और 8 में भगवान श्री कृष्णा ने हमें सत्वगुण के बारे में, रजोगुण के बारे में और तमोगुण के बारे में बेसिक एट्रीब्यूट्स उन्होंने बताया। कैसे हर एक गुण अपना अपना आकर्षण रखता है, कुछ चीजों से वो आकर्षित होता है। एंड इन श्लोका 9 and 10 we got to know the summary description of whatever he spoke about the three gunas till that point of time. तो श्लोका 9 और 10 में उन्होंने फिर से संक्षिप्त में समराइज किया कि उन्होंने रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण के बारे में क्या बताया था। So we will today start with shloka number 11. Now Krishna starts categorizing into three shlokas, groupings of three shlokas. तीन श्लोका का उन्होंने एक ग्रुप बना के अभी कृष्णा में एक्सप्लेन करने वाले हैं। So the first thing that Krishna is talking about how the modes are manifested. कैसे त्रिगुण और त्रिगुण के प्रभाव को और किस आईने से हमें देखना चाहिए। What are the symptoms of the त्रिगुणास? ये त्रिगुणों के विशेष वस्तु क्या है? What are the symptoms? So we straight away start with shloka number 11. So yesterday we also talked about Vasudeva state, Vasudhaiva Kutumbakam. कहाँ से ये the Vedic aphorism has come? Where does this terminology come? Vasudeva state, we learned that it is a state of pure goodness, Shuddha Sattva, Triguno se para. So Shuddha Sattva, it is a transcendental spiritual quality. Whereas Sattva is a material quality. Sattva guna भौतिक एक गुण है। शुद्ध सत्व वो आध्यात्मिक गुण है। इट इज दिव्य एक गुण है, ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी, एंड दैट स्टेट इज कॉल्ड Vasudeva state, the state wherein one can understand and become Krishna conscious fully. That is called Vasudeva state. And when a group of people, or if not the whole population, comes to the stage of Vasudeva state, that is called Vasudhaiva Kutumbakam, where everybody is more or less in a Vasudeva state. Vasudhaiva Kutumbakam also
it talks about how everybody belongs to the family of Krishna. सारे जीव जंतु कृष्णा के परिवार के ही है. तो उस मायने में वसुधैव कुटुंबकम, that is significant. Vasudhaiva Kutumbakam more importantly means, specifically means that everybody is in the Vasudeva state. सब लोग, simple terms, everybody is Krishna conscious. सब लोग कृष्ण भावनामृत स्थिति में आ चुके हैं. So now Krishna explains in the 11th shloka about Sattva Guna, the manifestation of Sattva Guna. And then he will explain in the 12th shloka about the manifestation of Rajoguna. He will tell in the 13th shloka about the manifestation of the Tamoguna. So let's see how he will start classifying. कैसे विभाजन करते कृष्ण गुणों को हम अब देखेंगे. सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते नानं यदा तदा विद्यात् Vivruddham sattva it uta. So the translation is the manifestations of the mode of goodness. Sattvam ityuta. तो सत्व गुण, किसी में सत्व गुण है, हम कैसे बता सकते हैं? The manifestations of the mode of goodness can be experienced when all the gates of the body are illuminated by knowledge. खुद व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि वो सत्व गुण में है? सर्वद्वारेषु देहेस्मिन्, the 9 gates of the body, prakasha upajayate, are illuminated by what? Illuminated by spiritual knowledge, illuminated by higher knowledge. And we already learned that a sattva guni is bound by gnana, so and happiness. आनंद और ज्ञान से बंधा हुआ है, तो he gets bound with it. We're supposed to be getting liberated. So that's why sattva guna is also a material quality, because it binds us to this material world. But it is better than rajo guna and tamo guna, and by continuously being in sattva state, somebody can come to the stage of vishuddha sattva, that is, can transform spiritually to Vasudeva state. So Prakasha Upajayate. So then Krishna says they're illuminated by knowledge. Jnanam yada tada vidyad. So Prakasha Upajayate. What illumination? The illumination through the medium of knowledge. What is illuminated? All the gates of his body. The 9 gates, the 9 holes of his body are we can say that they tend to do Krishna conscious activities. Vivruddham sattva ityuta. So there are 9 gates in the body. तो शरीर में 9 द्वार है, तो इसीलिए नवद्वार पुरे देही, नवद्वार पुरा, इस देह को नवद्वार पुरा बोलते हैं. A city of 9 gates. देही, it's occupied by the soul. तो इसके अंदर कौन बसा है? आत्मा शरीर के अंदर बसा है. So the 9 gates are the 2 eyes, 2 आंखें, 2 ears, 2 कान, 2 nostrils, हमारे नाक के जो 2 नंद रंध्र है, 6 हो गया अभी. The mouth, हमारे मुंह, the genital, हमारे जननेंद्रिय, and the anus, our मल विसर्जन का organ. So the eyes, the 2 eyes, the 2 ears, 2 nostrils, the mouth, the genital, and the anus, they form the 9 gates of this body. So the body is called city of 9 gates. In every gate, when the symptom of goodness is illuminated, it should be understood that one has developed the mode of goodness. तो हर द्वार में ज्ञान के प्रकाश से, when a person is illuminated,
व्हेन ए पर्सन, अब ज्ञान के प्रकाश से उसको बॉडीली कॉन्सेप्ट से वो उभर रहा है. ही इज एट अ बेटर स्टेट दैन द रजोगुणा एंड तमोगुणा. In the mode of goodness, one can see things in the right position. So now somebody can ask, what is the illumination of the genitals, the anus? How can knowledge be connected with that? It only means here that he is using every part of his body for developing sattvaguna. So he is becoming sattvic in nature. So the food he eats, uh, the reason why he evacuates, the reason why he procreates, all this are guided by spiritual knowledge, are guided by higher purposes. But he is attached by knowledge and is attached to happiness in the material platform. So he is not in a liberated state, the Sattva Guni also. But he is in a better position to get a chance to get liberated, to get into spiritual life. So one can hear things in the right position. तो वो जो भी देखेगा सही दृष्टि से देखेगा, तो ही सीज विद द राइट विजन. जो भी सुनेगा सही दृष्टिकोण से वो सुनेगा. सो उनका पर्सपेक्टिव, हिज पर्सपेक्टिव विल बी द राइट पर्सपेक्टिव. One can taste things in the right perspective. He's using the tongue for Krishna conscious activities. He's using the tongue to taste Krishna prasadam, not for sense gratification. So that is using it in the right position. One becomes cleansed inside and outside. Antaranga, Bahiranga, Shuddha. So that is Sattva Guna. And in every gate, there is a development of symptoms of happiness. And this is the position of goodness. You see, Anand, uska can say that his aim is to be happy. Lekin his criteria are material in nature. So what is the difference between a sattvic person and a person who is Krishna conscious? A sattvic person is in the material platform and his calculations of happiness are on the material platform. But he is in a better situation than that of a rajoguni and a tamoguni. और तमोगुण और रजोगुण के व्यक्ति से बेहतर सिचुएशन में है, लेकिन वो भौतिक निसर्ग से बंधा हुआ है. So now, when we have studied about Sattva Guna, the manifestation of Sattva Guna, let's also quickly do the Rajo Guna and Tamo Guna so that we can encapsulate it in a summary. Lobha pravrittirarambha karmanam ashamasspruha rajasye tani jayante विवृद्धे भरतर्षभा. अर्जुन को संबोधित करते हुए कृष्णा ये बता रहे हैं the symptoms of mode of passion. रजसी एतानि जायन्ते. तो वो चीफ ऑफ भरतास, भरतर्षभा, बेस्ट ऑफ भरतास, बेस्ट ऑफ the Bharata Vamsha, that is Bharatashaba. When there is increase in the mode of passion, Rajasi etani jayante vivruddhe. Rajasi vivruddhe. When there is excess of Rajoguna, when somebody is in Rajoguna, typically, the symptoms of great attachment, uncontrollable desire, hankering and intense endeavor develop. तो रजोगुण का व्यक्ति, उसका स्वभाव कैसा रहेगा? लोभः, क्रीडी, प्रवृत्तिर आरंभः. So he is having a intense desire for startups, to start off things, to endeavor. Karmanam ashamasspruha, uncontrollable desire for work, for activity,
intense endeavor. He's attached. So, lobha pravritti arambha karmanam ashama spruha rajasi vivruddhe. When there is increase of rajoguna, what are the characteristics features we see? We see great attachment, uncontrollable desire. So, or hankering and intense endeavor. So he's going to work, like example I gave of donkey in the previous class. He's a very hard working person. So one in the mode of passion is never satisfied with the position he has already acquired. कभी वो एक भौतिक स्थिति से वो खुश नहीं रहता. उसको 10 लाख मिलेगा तो वो 20 लाख के बारे में सोचेगा. So there is no end to his desire. There is no way that he can be satisfied. करोड़ों रुपए कमा लेगा लेकिन फिर भी काम करेगा गधे की तरह. और बहुत सारे करोड़ रुपए कमाना है उसको. So there is no end to it. So he is never satisfied with the position he has already acquired. ये मिलेगा तो और चाहिए. लोभः, greed. He hankers to increase his position. आज मैं एक साधारण टीचर हूं. मुझे प्रिंसिपल बनना है. मुझे अपना एक स्कूल खोलना है. मुझे उसका चेयरमैन बनना है. फिर मुझे एक ग्रुप ऑफ स्कूल्स चाहिए, चेन ऑफ स्कूल्स चाहिए. You see, his plans will increase. आज एक कंपनी का मालिक हूं, कल मुझे और 2 कंपनियां चाहिए. यही कंपनी का अलग अलग ब्रांचेस चाहिए मुझे अलग अलग शहरों में. फिर भारत में फैला दिया. अभी दुनिया में जाना है मुझे मतलब इंटरनेशनल ट्रेड आई वांट टू डू. So there is no end to his desire. Intense endeavor, and he will work very hard for it. So somebody might ask, Prabhu, is it wrong to work hard? It is not wrong to work hard, but it is better to work smart. And smart work means you are not only working intelligent, you are also being intelligent. Because you must know why you are working. क्यों आपको चाहिए? क्यों आपको काम धंधा चाहिए? Why do you need to acquire money? Why do you need to have a house? Why do you need to have activity? Why do you need to have family? Must be very clear. And to that extent, it must be worked for. Otherwise, Krishna says, if we have everything and we have no Krishna in our life, and it is Shrama eva hi kevalam, then all the intense endeavor is going to be finally going to go into the doldrums. क्योंकि जब कृष्ण जीवन के केंद्र में नहीं है, जो भी हम हासिल करेंगे वो व्यर्थ हासिल करना होगा. बिकॉज एक दिन हमें भौतिक जगत में सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा. जो हम लेके जाएंगे, कृष्णा कृष्णा की यादें, कृष्णा की भक्ति, कृष्णा के आशीर्वाद, कृष्णा के सेवा के जो पूंजी हमने पाया है, वही हम अपने अगले जन्म में, इफ देयर इज अनदर लाइफ, मटेरियल लाइफ, हम लेके जाएंगे. Otherwise, we will go back home, back to Godhead, and go and serve the Lord in our constitutional position. So, if he wants to construct a residential house, he tries to have the best palatial house. So, as though he's going to reside in that house eternally. Again, nothing wrong in having material possessions as long as we know what is the utility of it. If I become too attached to it, if my only goal is to acquire more, then one day I'll be no more. तो मेरा प्रवृत्ति केवल चीजों को पाने में, मैंने जिंदगी को गंवा दिया, जीवन को व्यर्थ कर दिया. अगर सिर्फ उसमें मैंने अपना सारे शक्ति निछावर कर दिया, तो that means I have underutilized my human life. I have been miserly. तो कृपणः, Brahmana is one who has understood the value of human life
and he is progressing spiritually. Whereas Krupana is a one who has utilized his potential not to the full extent. तो किसी को मानव देह मिल गया और उसको उसने आध्यात्मिक प्रगति के लिए कृष्ण भावनामृत स्थिति में जाने के लिए उपयोग नहीं किया, तो उसने he has miserly used his human form of life. So further, there is no end to sense gratification for the person in rajoguna. तो हमेशा इंद्रिय तृप्ति के पीछे दौड़ता रहता है. So all these Hiranyakashipu, Hiranyaksha, they were tamo rajogunas. They were having intense and desire, endeavor, hankering. So this Daitya guna it is. And there is no cessation to this sense gratification. इसका कोई अंत नहीं है. ये तो ऐसा हो गया जैसे आग में घी डालने का काम. और इंद्रिय तृप्ति उसने पा भी लिया तो घी में वो अग्नि में घी डालने के बराबर है. अब तो उसको रुचि लग गया, लत लग गया. लाइक हाउ अ टाइगर बिकम्स अ मैन ईटर. उसको पहले when he hunts a human being for the first time, he gets the taste for that blood, and after that he becomes a man eater. So similarly, the Rajoguni will become like that camel who is chewing on the thorns and is enjoying the taste, not knowing that it is his own blood, that the tongue is getting cut by the thorns. उसका जीभ, ऊंट का जीभ जब वो कांटे को काटता है, इट ईट्स थॉर्न्स, तो वो कांटा उसका जीभ को काटता है और काटने से उसकी जीभ से ही रक्त निकलता है और वही रक्त का स्वाद उस ऊंट को अच्छा लगता है. सो ए पर्सन हु इज इन रजोगुणा इज लाइक दिस. अपना ही खून बहा रहा है, खून पसीने से जो मिलेगा हम खाएंगे. वेयर इज ऑल दिस थिंकिंग कमिंग फ्रॉम? एंड इट इज राइट ऑल्सो, बिकॉज वो अपना खून और पसीना बहाएगा और उसी का रुचि लगेगा उसको. सो टाइगर इज अ मैन ईटर, ही इज अ सेल्फ ईटर, इज कैनिबलाइजिंग ऑन हिमसेल्फ. वो अपने आप को खा रहा है, अपने आप को खत्म कर रहा है. सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मोड ऑफ पैशन. रजोगुण आदमी का ये प्रवृत्ति है, अपना खून और पसीना, खून सुखा देगा वो इंद्रिय सुख के पीछे, to get all the comforts that one day which he is going to live and go. So yes, you work for it, good, but then have you also thought about what I will do after this life? Have you done something about it? इस जिंदगी में आपने अच्छी तरह जी लिया, सो कॉल्ड. कैसे अच्छी तरह जी लिया? जब पैसे कमा रहे थे, आपने आहार निद्रा सब छोड़ दिया. You forgot to sleep, you forgot to eat nicely, you starved and you worked and worked and worked. और जब इतने पैसे हैं आप खा नहीं सकते क्योंकि अभी डायबिटीज हो गया. नो स्वीट्स यू कैन ईट. अभी एपेटाइट भी निकल गया, बूढ़ा हो गया वो. रिटायर होने के वक्त 60 साल का बूढ़ा हो गया. ना शरीर में शक्ति है, ना आसक्ति है, ना खाने का रुचि है, ना डाइजेस्टिव पावर है, और उसके ऊपर डायबिटीज है. उसके ऊपर हाइपरटेंशन हो गया, डॉक्टर ने बता दिया ये मत खाओ वो मत खाओ. पैसे होते हुए भी वो नहीं खा पा रहे हैं. So he'll bring himself to that situation. This is the story of a रजोगुणी. लेकिन फिर भी उसका इच्छा, इंद्रिय तृप्ति करने का प्रवृत्ति 60 साल की उम्र में भी खत्म नहीं हुआ. So those people who will tell now Bhagavad Gita is not meant for not meant to be read now. अभी नहीं, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब हम पढ़ेंगे. तो उस बूढ़े व्यक्ति को जाके आप पूछिए, अब आप बूढ़े हो गए हो, रिटायर भी हो चुके हो, क्या अभी आप भगवत गीता पढ़ेंगे? अरे क्या बात कर रहे हैं प्रभु, अभी रिटायर हो गए, अब तो हमें जो हमने कमाया है उसका पूरा जो फायदा है, तृप्ति है, हमें पाना है.
उस उस पैसे से हमें बहुत कुछ करना है। और बेटा है, बेटा का शादी करना है, फिर उसका पुत्र होगा, उसके लिए कुछ पूंजी इकट्ठा करके रखना है। You see, he's already gone into second generation and third generation. So that's the story of रजोगुणी। तो तमोगुणी का स्वभाव क्या है? How is he identified? अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। तमसि एतानि जायन्ते विवृद्धे। The increase in tamoguna, when somebody is situated in tamoguna, when somebody is predominantly tamoguni, जब कोई व्यक्ति तमोगुण वाला है, हे कुरुनंदना, हे अर्जुना, तो उसका क्या स्वभाव है? O son of Kuru, when there is an increase in mode of ignorance, tamasi vivruddhe, madness, illusion, inertia, and darkness are manifested. अप्रकाशो, डार्कनेस, द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञान का अंधकार उसके जीवन में आवृत है। अप्रवृत्ति, नो प्रोग्रेस, प्रवृत्ति प्रोग्रेस, अप्रवृत्ति इनर्शिया, नॉट गोइंग एनीवेयर, कहीं डजंट नो व्हाट टू डू, एंड व्हाटएवर ही इज डूइंग ही डजंट नो व्हाई ही इज डूइंग इट। क्या करना है उसको पता नहीं है, और जो भी कर रहा है अपने शरीर को जोड़ के रखने के लिए, क्यों करना चाहिए उसको पता नहीं है। सब प्रवृत्ति, inertia. Now materially he will not progress materially, he will never progress spiritually. So at least a rajoguna person is trying to progress materially, although he is never going to be satisfied. इस व्यक्ति का वो भी नहीं है। प्रमादा, madness, पागल की तरह, मतलब न मकसद, there is no madness, like yesterday we talked, mad person is a person who doesn't know what he is doing, doesn't know what he is thinking, doesn't know what he is saying. सो प्रमाद, मोह, इल्यूजन, भ्रमित है वो। सो मैडनेस, इल्यूजन, इनर्शिया, डार्कनेस आर द कैरेक्टरिस्टिक manifestations of a person in तमोगुण। तमसी एतानि जायन्ते विवृद्धे, क्या विवृद्ध हो रहा है? अप्रकाशो, अज्ञान का अंधकार, अप्रवृत्तिस, कोई प्रोग्रेस नहीं, कोई प्रवृत्ति नहीं, प्रमाद, पागलपन, मोह, भ्रमित होना, भ्रमित स्थिति में रहना। सो let's read the purport, the short purport. And there is no illumination, knowledge is absent. जहां पे प्रकाश नहीं है वहां पे अंधकार है। So where there is sunlight, there is no darkness. So shadow means there is absence of sunlight there, it's being blocked by a body. And darkness means their sun rays are not reaching there. Similarly in a person's life, Krishna Surya Sama, Maya hai andhakar. So Krishna is like the sun and Maya is like darkness. So where there is Krishna, there cannot be Maya. So where there is no Krishna, there is Maya by default. So we are either Krishna conscious or Maya conscious. There is no neutral consciousness. So there is no state of being which we can say that हाँ मैं माया से प्रवृत्त, मैं माया से अट्रैक्टेड नहीं हूं, लेकिन कृष्णा से भी अट्रैक्शन नहीं है। ऐसा कोई स्थिति, इन बिटवीन स्थिति होता नहीं है। या तो मैं माया कॉन्शियस हूं या मैं कृष्ण कॉन्शियस हूं। दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड मार्जिनल एनर्जी। Marginal energy means sometimes I can be Krishna conscious, I can be Maya conscious. I have a tendency to get into Maya consciousness. I have a tendency to be in Krishna consciousness. The more I hear about Krishna, the more I do Krishna conscious activities. जितना मैं Krishna conscious activities करते रहूंगा, day in day out, every day. Krishna is telling सततम कीर्तयन्तो माम, तो भजन्ते माम अनन्य भाग। कृष्णा इज नॉट टेलिंग भजन्ते माम 2 घंटे एक दिन में, अनन्य, तो एक दिन की भी बात नहीं कर रहे, वो तो मतलब आजीवन, अनन्य भाग। सो नित्य उपासते, नॉट मंथली एक दिन, जैसे कि एकादशी 15 दिन में एक दिन,
15 दिन में एक दिन जब हम मनाते हैं, ऐसा नहीं है। तो इट इज नित्य, always, and it is going to be like satatam, and in all through my life and at all point of time, I must always be Krishna conscious. Then I will always remain with my face facing towards Krishna, I'll keep moving towards Krishna. Otherwise, the default tendency is, when Krishna is not there in my life, जब light switch off होता है, what is the automatic manifestation? Darkness. तो जब कृष्णा हमारे जिंदगी से दूर हो जाते हैं, तब केवल माया का अंधकार रहता है. Of course, Krishna will never go away from us. When we feel God has gone away from us, actually it is we who have gone away from God. तो ये हम हैं जो भगवान से दूर आ गए. वरना Krishna is always there with us. He is a part of our journey. We have forgotten Krishna. We cannot blame Krishna. Oh, Krishna, you have forgotten us. It is we who have forgotten Krishna. So, one in the mode of ignorance does not work by a regulative principle. There is no purpose in his actions. There is no basis of his. There is no basis for his action. The only reason why he acts is he has to fill his belly. And he has to have a nightlife. And because he doesn't know what to do when he's awake, if he's not working, he's drinking. He's with wine and women. This is the only endeavor in his life. Otherwise, even though he has capacity to work, he makes no endeavor. मतलब काम करने की क्षमता है, करेगा नहीं. And this is called illusion. So although consciousness is going on, life is inactive. मतलब जड़ जीवन, बिल्कुल बेकार वाला जीवन वो जी रहा है. These are the symptoms of one in mode of ignorance. ये तमोगुण व्यक्ति का characteristics है. So we will go and do one more shloka. We have time to do one more shloka. We will take up shloka number 14. यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते. Quickly we will read the translation. When one dies in the mode of goodness, Krishna is also telling, जिएगा कैसे जिएगा, क्या आधार है उसका जीवन का, मरेगा कैसे मरेगा, सत्व गुण वाले कैसे मरेगा, और मरने के बाद क्या, उपरांत क्या होगा, रजोगुण वाला कैसे मरेगा, मरने के बाद उसका क्या होगा, तमोगुण वाला कैसे मरेगा, और मरने के उपरांत उसका क्या होगा. Krishna is telling. So that's why Krishna consciousness, Bhagavad Gita is a great science. All questions are answered here. When one dies in the mode of goodness, yada sattve pravruddhe tu pralayam yati dehabrat. प्रलय काल में सत्व गुण में आपने शरीर छोड़ दिया, किसी ने शरीर छोड़ दिया, तो he attains to the pure higher planets. तदा उत्तम विदान लोकान अमलान प्रतिपद्यते. Pure planets where he can increase his sattva guna and he'll get a chance to become Shuddha Sattva. Tada Uttama Vidan Lokan. But it is in the material world. Swargalok. So he will get higher planets. Uttama Vidan Lokan. He may even come up to the stage of coming to Brahma Loka, the highest planetary system in the material world. He may come up to that platform also. He may even become Brahma. Brahma is a position. Brahma is not the name of the person. Brahma is a position. Of course, it's also colloquially the name of the demigod who is the creator of this particular universe, our universe. And there are many, many Brahmas because there are many, many universes. अनेक ब्रह्मा है क्योंकि अनेक ब्रह्मांड है. तो कोई पुण्य पाके अच्छे कार्य करके सत्व गुण में
आगे बढ़ के ब्रह्मलोक तक जा सकता है, और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा भी बन सकता है. But Brahma is also a material position, but Brahma has the best chance of now completing his material life amongst all the human beings. Because Brahma is also a devotee. तो ब्रह्मा को भी एक सुनहरा अवकाश है कि शुद्ध सत्व गुण वो तप से when Krishna, when he first meditated on Krishna, when he first manifested, Krishna appeared in the form of words, and he told him tapaha. He told ब्रह्मा आपको तप करना है. तब आपको सारा ज्ञान आ जाए कि क्या आप कौन हो, आपका जो क्रिएशन है क्यों हुआ है, आपका कार्य क्या है, आपको क्या करना है, और मैं कौन हूं, और मेरा और आपका रिश्ता क्या है. ये सब पता चलेगा कि ब्रह्मा को वो बोलते हैं, और ब्रह्मा तप करते हैं. सो सत्वे प्रवृद्धे प्रलयम याति देहभृत. when he gives up his body, when he dies, what happens? He attains to the pure higher planets. So similarly, what happens to a person in Rajoguna and Tamoguna? First we'll read the purport. One in goodness attains higher planets. लेकिन वो इसी भौतिक जगत में रहेगा. ब्रह्मलोका जनलोका. सो ब्रह्मलोका, तपलोका, जनलोका, महरलोका. Then there is Swargaloka, Swarloka, and Bhuvarloka and Bhuloka. We are in Bhuloka, middle planetary system. Above that is the Bhurloka, where all our ancestors, Pitragana, lie. They live there, waiting for salvation. तो जो पिंडदान होता है, वो सब किसको हो रहा है? जो पितृलोक में जो रह रहे हैं, उनको they have still not completed their karmic cycle. Because of untimely death, or because of not having finished their karmas. So the जो पीढ़ियां हैं, their progenies, when they give them pindadan, then that is how they survive, because they don't have a physical body to eat. But when Havan Kund and the pindadan is done, that is when they can eat. So when Krishna Prasad is given as pindadan, then they will get liberated. So it's very important ritual, pindadan. So there they enjoy godly happiness. स्वर्ग लोक में क्या होगा? उसका नियत क्या था सत्व गुण वाले का? ही वांटेड हैप्पीनेस. तो अभी स्वर्ग लोक जाएगा तो उसको क्या मिलेगा? अधिक मात्रा में उसको आनंद मिलेगा. स्वर्ग में क्या है? स्वर्ग में तो स्वर्ग का आनंद है, तो वो पाएगा वो. Amalan, it means is free from modes of passion and ignorance. तो तमोगुण और रजोगुण से वो परा हो चुका है. So the impurities are over. Therefore, he is able to enter the next world, that is the Swargaloka. Those who die in mode of goodness are elevated to these planets where great sages and great devotees live. So स्वर्गलोक में जा सकता है, या फिर तपलोक, जनलोक, महरलोक, or he can even go to Brahmaloka, depending on the punya he has accumulated, and depending on his current level of understanding. So thank you very much for joining me today. We will meet again tomorrow and continue this nice discussion about the three gunas. And Krishna has told, one who understands this chapter comes back to him. तो जो इस अध्याय को समझ जाएगा, केवल समझने से